उन्होंने फिर इस्लाम वाला पूरा वो ऐड कर दिया है। Right. तो दैट्स अनदर वन कि स्टेट को आपने 20th सेंचुरी में एक मेडिवल आइडियोलॉजी की बुनियाद पे ग्राउंड किया है। हाँ जी। और द थर्ड इज ऑफ कोर्स दिस स्टेट हैड स्टार्टेड ऑल द वॉर्स विथ इंडिया, कि ना सिर्फ आइडियोलॉजिकल कि वी आर गोइंग टू बी अगेंस्ट इंडिया, बट ऑल्सो स्टार्टिंग वॉर्स टू विन कश्मीर। हाँ, कश्मीर फिक्सेशन, दिस इज नंबर 3। आई हैव सेड कि कश्मीर वॉज लॉस्ट by Pakistan because of Jinnah. I have given 3 occasions when Sardar Patel, by the way, is involved. First is Mountbatten comes on the 1st of November to Lahore to discuss. Partition had taken place, but the partition process was still on. And he said that we can have plebiscite in Junagadh, Hyderabad, and Kashmir. And Jinnah rejected that out of hand because he knew कि कोई प्लेबिसाइड ना आप जूनागढ़ में जीत सकते हैं, ना आप वहां जीत सकते हैं हैदराबाद में। द हिंदू पॉपुलेशन वाज 80% प्लस, सो नो चांस। in the case of Kashmir, although it was a Muslim majority state, but Jinnah was not sure कि वहां पे जो कश्मीर वैली है जहां पे शेख अब्दुल्ला का होल्ड है, द मुस्लिम्स विल वोट फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान। एक तो ये बात है। एंड ही रिलाइड ऑन हिज मिलिट्री एडवाइजर्स के हमने जंग करके हिंदुओं को पहले भी हराया था तो हम भी हरा देंगे, लेट्स नॉट निगोशिएट, हम जंग के जरिए जीत जाएंगे। वो कर नहीं सके, जंग वो हार गए ना। Yes, sir. सो ये सारे 3 ब्लंडर्स हैं, एंटी इंडियाइज्म, कश्मीर फिक्सेशन, एंड trying to ground Pakistan on a medieval idea of the 7th century. They still haunt Pakistan. That's true. Hmm. Okay, sir. So we have one more question. Two more questions. What are your views relating to mixing religion with politics? And we are not talking about India. We are talking about General Ziaul Haq, like how he mixed religion with politics and how it impacted the Pakistan as it was before and as it is now. Well, I think all this potential was there in Pakistan. Jinnah, Ziaul Haq had no other way to establish his legitimacy except he said that no democracy if Islam, it is Islam that we want in Pakistan. Because if Pakistan was not to be an Islamic state, why did we need to separate from India? And so I think he was speaking honestly the basis of the Pakistani state. वरना इंडिया के साथ एक ही हम सारे रह तो रहे थे ना, इसको अलग किया क्यों, पंगा क्यों लिया कि हम अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं। वो कौन सी स्टेट होती? तो वो इस्लामिक स्टेट ही वाली बात थी। एंड जिन्ना ने वो ज़ियाउल हक ने फिर जो इंट्रोड्यूस की सारी चीजें, वो इतनी रिएक्शनरी थी, आउटडेटेड थी, मेडिइवल थी, कि उन्होंने फिर सत्यानाश पाकिस्तान का कर दिया। ये ब्लास्फेमी लॉ भी वहां से आई। अब उस निकाह के फॉर्म पे भी लिखना पड़ता है कि आई बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये इस किस्म की बातें इन्होंने शुरू कर दी हैं, बजाय थोड़ा सा उसको लिबरल किया जाए, उसको और एक्सट्रीमिस्ट कर दिया। तो जिया के दौर में जो भुट्टो ने शुरू किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग इस्लाम एंड ऑल, उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, एंड नाउ कोई उसमें से बाहर निकल नहीं सकता। इतनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, डिड दे मेक अ मूव to get rid of the blasphemy law? No. So Ziaul Haq has completed the process of a reactionary idea which was the basis for demanding the partition. उसने वो पूरा करके दिखा दिया है। और अब मुसीबत ही मुसीबत है पाकिस्तान के लिए, ना इकॉनमी चल रही है। जो पैसा आता था वो ये बाहर से आता था, अमेरिका से, पहले अफगान जिहाद के लिए और बाद में ये वॉर ऑन टेरर के लिए। पाकिस्तान की अपनी जो है वो तो रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड चमड़ा चुमड़ा ये किस्म के और थोड़े से कारपेट्स भेजते थे, नथिंग मोर। टेक्सटाइल होती थी, वो इन्होंने खुद ही तबाह कर दी बाय नॉट डेवलपिंग
energy sources. Indus Water Treaty के मुताबिक Pakistan should have built barrages and all. They didn't do it. So nobody has ever really gotten down to, consolidate Pakistan in a functioning manner. जो आया उसने अपना फायदा उठाया और आगे चला गया, ऐसे हुआ. Too much individualism in the leadership, right? So Too much selfishness, narrow-mindedness, lack of basic awareness के ये क्या ऑफिस कैसे होल्ड करते हैं. बस स्टैंडर्ड फार्मूला के कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है. लोग कहते हैं यार अपने मुल्क में तो जो आप जुल्म कर रहे हैं उनको तो देख लें, बलोच क्या कहते हैं. और आपके सर पे तो अब तालिबान आके बैठ गए, उनका फिक्र करो तुम. right. So, sir, we have this second last question is, as you have written the book, The Pakistan, a Garrison State, so we all know that you have a good familiarity with the understanding of the military mindset. So my question is, what kind of relationship does the Pakistan military have with China, and what kind of relationship do you think they want with China? That's a very interesting question. First of all, China for them is important to prop them up vis-a-vis India. So from a military point of view, China is their natural ally because now the Americans lean towards India, so that can't be the external power that they can rely on. Okay. Second is, do the Pakistani generals really want a cozy relation with China? I have my doubts because all the money they have stashed away in the West, और अमेरिका में इनकी सारी ट्रेनिंग हुई थी वो वेस्ट पॉइंट पे, ये और वो, इनके लिंक्स तो अमेरिकन के साथ है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी it's not a alliance with China which is based on shared values. It is pure balance of power politics. Their real loyalty, if you want to call it, or their real preference is America, जहाँ पे इनकी मौजें ही मौजें हैं. वो आसिम बाजवा ने जाके वहाँ पे वो होम डिलीवरी में पता नहीं मिलियंस कमा लिए हैं. वो एक जनरल थे हमारे, और बाकी जनरल कहाँ जाके अपनी वेल्थ लेके जाते हैं? चाइना लेके जाते हैं, वो अमेरिका लेके जाते हैं ना, या लंदन में घर घुर खरीद लेते हैं. तो उनका काबा जो है वो मक्के में नहीं है, वो इधर वेस्ट में है. हाँ. जी सर. सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू थिंक दे वांट, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि चाइना किस तरीके से उनकी हेल्प करे that will be the best beneficial or acceptable to Pakistan? I don't know. How could I know? I can only say that for them, military support, diplomatic support from China is important to keep India at bay, or to assert themselves vis-a-vis India. And China does it because that's the only power they can really prop up to keep a pressure on India. That's all. So it's not shared values. It is a shared sort of object. Both want to, uh, you know, counter in some way. Counter in some You're way. right, sir. It's purely a balance of power politics. Balance of power politics. Yeah. So, sir, we come to the last question, and the last question is Pakistan and India and a utopian future. What, according to you, is a utopian future for India, Pakistan? Utopian means, by the way, that which can never be achieved. So, but like ideal but future. Ideal future तो यही है कि they come to terms with the reality that these are neighbors forever. Unless Pakistan disintegrates or India disintegrates, I'm just talking about these things. Normally, these two states, I think, can mutually benefit from each other, especially through trade, through education, and cultural exchanges, and so on. And it's not impossible. Somebody talking about such a cozy relationship in 1939 would be laughed at when the Second World War started.
the French and the Germans and the British fighting, the millions of people killed. But today you find all that they have put behind. So why can't this happen in Pakistan and India? When I went to India, my feeling was this is possible. Earlier, I had gone to Pakistan and I felt people were very receptive. So I could present my point of view. And everybody knows that good relations with India will give a lot of benefit to the Pakistani consumers and so on. And even Pakistani traders and others will get an Indian market, so it will be mutually beneficial. And then the trade route can go all the way to Central Asia, and the gas pipe can come from Iran and Central Asia and Russia. Oh, this whole region would benefit. Not That's doing right. it is an act of stupidity on the part of those who make such decisions. That's right, sir. So, sir, we'll wrap up this interview. Thank you so much for coming. Thank you so much for your time. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और it's a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you, sir. Have a nice day. For more such content, like, subscribe, and follow the Big Histories podcast page.